Hello, everyone. Welcome to Zoom TV. I'm Parul Sharma, and I hope you are all safe and healthy. Today, I have with me the cast of the upcoming film Helmet. Please join me in welcoming Aparshakti Khurana, Pranutan Bahl, Abhishek Banerjee, and Ashish Verma. Hi, everyone. How are you all doing on this Hello, fine Parul. day? What's Hi, Parul. Good, Hi, thank thank you for you. having us there. ladies and gentlemen? Parul Sharma in the house from Zoom TV. All right. Thank you, thank you. Firstly, Aparshakti, congratulations on the birth of your baby girl. I hope both your wife and the little one are doing great. We are in great health and touch wood. बिल्कुल सही है घर पे सब मजा आ रहा है जिंदगी का. That's lovely. So, how is that going? How sleepless are the nights? And now that the Yeah. little one is So finally here, when we started this, I was telling Ashish कि मैं सोया नहीं हूँ बिल्कुल भी, and और यहाँ पे आने का मन नहीं था. But having said that, I mean, work is work. You had to come. So, I mean, yeah, kudos to you. It's just been a couple of days. yeah. Now that the little one is finally here, what is one thing that you can confidently say you were not prepared for? I think मेरी जो ऊंची हंसी है, मुझे नहीं पता था कि उसको दबाना पड़ेगा. बाकी more or less we were prepared, yeah. More or less we were prepared. Next interview, maybe we'll pick up on what all you've learned now. Then. Absolutely. Let me get my lessons right till then. So I want to know from all of you, we can go one by one. Were any of you ever given the talk about sex and protection by anyone in your life? And do you recall that experience? Sex education, I don't think यार किसी ने नहीं बताया यार. मतलब I think I discovered it. मतलब the first time I think I got educated about sex was through friends and Right. who were a little probably 1 year older to me in school and yeah. Abhishek जी ज्यादा नहीं पता होगा. I mean, you never know. In college, क्या पता उनको कितनी knowledge है, कितनी नहीं है. नहीं पाजी, मुझे बेसिकली दोनों दोस्तों ने एक एजुकेशनल वीडियो दिखाई, एजुकेशनल वीडियो जहां पर that's how I really, I mean, that's the sad thing about the whole system that actually जिस चीज को हम या कहते हैं कि खराब है और ये है, बट बच्चे जो है आई थिंक सबसे पहले जो है they're watching something online and that's how they're getting to know about everything, about sex and about the sex life and everything, and nobody's really telling them the right way to do it, or nobody's really telling them कि ये होता क्या है, why are condoms used and why it is so important to use condoms. So घर पे तो कोई बात करता नहीं है. घर पे बात करने का मतलब है चाटा खाना या आपकी मतलब जिसे कहते हैं कि आप बिगड़ गए हो and the kid is spoiled और छोटी उम्र में हाथ से निकल गया बच्चा, ये सारी चीजें हो जाती हैं. तो घर पे तो सवाल ही नहीं उठता. ऊपर से टीचर्स जो है वो बायोलॉजी का आई थिंक वो एक चैप्टर होता था, मुझे याद है वो चैप्टर के बारे, हाँ, रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है आई थिंक सारे बच्चे वेट करते थे कि मतलब ये चैप्टर के बारे में हमारा टीचर आके कुछ बताएगा, बट वो चैप्टर फटाफट निकलता था विद इन एक पीरियड में. मतलब टीचर भी शर्माती थी, या अगर फीमेल टीचर है तो बहुत शर्माती थी. पेज नंबर भी याद है मुझे उस बुक का, बिकॉज़ लोग इतना वेट करते थे कि होगा उस बारे में बात. हाँ रन थ्रू इट, exactly. So it's very sad यार. मतलब बहुत ही दुखद बात है कि मतलब हमें एक्चुअली किसी ने नहीं बताया, हमें सेल्फ लर्न करना पड़ा, हमें अपने आप को सिखाना पड़ा, हमें अपने आप को सारी चीजें समझानी पड़ी. तो it's that, like that is how I think majority of our kids are growing up in this country. But I want to say something that fortunately that was not the case with me, because my parents did speak to me about it, and in that's fact actually big change. Yeah, they're very progressive, and they even spoke to me about the insistence of using protection whenever I choose to have that in my life. And I was very young at that time. I think I was 15 or 16. But I think kudos to them for now in retrospect, when I look at the society that we are unfortunately conditioned to, Right. that they were very concerned about my health and safety, and I wish that parents approached it like that. They stopped approaching it as a taboo, and they started caring for their kids' health, because you care, when your kid gets a fever. So would you not care, unfortunately, if they get an STD? I mean, that is even more invasive and even more dangerous, if I would say so. So that's the way my parents chose to approach this topic with me. I think I was around 15 or 16, and hats off to them, because kudos to them. Yeah, really, that's lovely to hear. लेकिन ये बहुत मुश्किल है, छोटे शहर में. So I'm really happy that places like Mumbai have that, parents have that wisdom to talk about it. छोटे शहरों में जहाँ तक हम चाहते हैं कि ये फिल्म पहुंचे, I think it's really important for people to talk to their daughters, to their sons, to
ताकि उसी से ही दायरा खुलेगा और कोई वे आउट है नहीं. And also, I feel that this so-called sharam and taboo that people feel is because the family makes you feel like that. हमें डर क्यों लगता है केमिस्ट शॉप जाने के लिए? हमें केमिस्ट वाले से डर नहीं लगता, हमें डर लगता है क्योंकि फैमिली झाड़ देगी, क्योंकि वो केमिस्ट वाला जानता है फैमिली को. तो it all starts from home. If you make it chilled out, yes, my son or daughter, I know, yeah, they purchased a condom. So what? The parents should be able to look in the eye and say, I know what my kid is up to, and there's nothing wrong with it. So it starts from that. Absolutely. Ashish, what about you? Do you recall any experience that you were given sex education? No, I don't think so, because as Apar and Abhishek, everyone is talking here, कि स्कूल में भी जब वो चैप्टर आता था तो फिर वो कुछ सेकंड्स में निकल जाता था, और मेरे को याद भी नहीं कोई क्वेश्चन पेपर में, कोई एग्जाम में उसका कोई सवाल भी आया हो. कन्वीनियंटली वो स्किप हो जाया करता था वो चीज. अब जहां तक घर की बात है, थोड़ा मैं शर्मीला था, थोड़े घर वाले शर्मीले थे या क्या था, बट मैंने जो भी सीखा मैंने ऑन द जॉब सीखा है. On the job. On the job, वर्मा साहब. So मैंने सुना जॉब भी काफी लेट लगी. जी, काफी लेट जॉब लगी मेरी. पर जब मेरी जॉब लगी ना, मैंने छोड़ी नहीं. जॉब नहीं छोड़ी मैंने. तो वैसे ना इसलिए क्योंकि पैकेज अच्छा मिला ना तुझे. करेक्ट. मेरा एनुअल पैकेज बहुत भारी था. TTC बहुत अच्छा था. हाँ. So, but yeah, on a serious note, like as even Pranutan is saying, like condoms आपको एक medical shop पे मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको it's, how do I say, मतलब it's nothing. Basic necessity, sort of. Basic necessity, which is health related. It's a medical shop, man. It's not. Yeah. You don't have to go to a sex shop to get it. Yeah. You don't have to go to a wine shop to get it. Exactly. It's a medical store. Aparshakti, now that you're a father, do you think you will be having this conversation with your child as and when the time comes? Absolutely. Rather, मैं अभी से पहले वाले इंटरव्यू में एक बात बता रहा था. हमारे एक फैमिली फ्रेंड है जो हमें हॉस्पिटल में मिलने आए हुए थे, एंड उन्होंने आकृति को एज प्रेग्नेंट भी देखा हुआ, कुछ महीने पहले देखा था. एंड उनकी जो डॉटर है उसने पूछा कि अरे टमटम कहाँ गई, वेयर इज टमटम? सो वी सेड टमटम इज आउट, उनके पापा अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो ना एरोप्लेन से गए और टमटम को लेकर आ गए. आई वाज लाइक नो. अभी मैंने उसी समय उस कॉन्वर्सेशन को स्टॉप किया एंड आई ट्राइड टॉकिंग अबाउट इट because I think that's how it has to be, and rather, मुझे ऐसा लगता है कि I'll be able to talk about each and everything to my daughter. And मैंने कल और परसों मैंने उसका डायपर चेंज किया था मैंने, तो वहां पे जो हॉस्पिटल स्टाफ था उन्होंने ही मुझे बोला कि यार ये तो फर्स्ट फादर जिनको मैंने डायपर चेंज करते हुए देखा है, स्पेशली टू अ डॉटर. एंड आई वाज लाइक, इसमें कितना मुश्किल काम है. Pranutan, we've of course heard about the boys recalling their experiences buying condoms. I want to know from you, have you ever bought condoms in your life? Because putting it bluntly, in our society, you and I both know, being females, that buying any form of protection is sort of, or anything to do with sex is like hai tauba sort of scenes, right? No, unfortunately, I haven't ever purchased a condom, and I hope that helmet changes this perception completely. As you said that, yeah, of course, women are guilt tripped and shamed, I think 10 times more as opposed to a boy. And this is something I would want to urge all the girls to do. I'm going to do it. It's going to start with me. I'm going to make sure that I do go to a medical store and I purchase a condom, because there's nothing wrong with it. And also, we need to break the chain. We need to break this mentality of, oh, how can a girl do that? Oh God, a girl did that. That's even more disgusting. I think that's really down thinking. And 5 times they'll stare at you and say, oh, okay. 6th time they're going to shut up. No? So you don't ever take that step, then we won't break the chain. Abhishek, by the way, I'm from Hansraj College. Our colleges were neighbors in Delhi University. Oh. So that makes us 3 of us. That makes 3 of us, because Ashish and me both are from KMC players. KMC. Yeah. You've done theatre in college. You're also a casting director, and of course now we see you in great movies doing a kick-ass job. I'd like to know which of these is your first love, so to say,
And then also, what advice can you give to actors who are trying to enter this industry via all these mediums? Because coming from like humble beginnings yourself and being like a poster child for someone who has a dream and is making it. Now that you're from Hansraj, you know that, players क्या है, KMC में जब हम थिएटर करते थे और DU में जब हम थिएटर करते थे, वो कितना ज्यादा मायने रखता था. Right. वो एमेच्योर थिएटर कभी नहीं लगता था. इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स जो दूसरे कॉलेज से भी जब आते थे, परफॉर्म करते थे, it used to look like very professional setup. We used to treat it professionally. I think we have always been taught to be professional on stage and off stage. एंड तो ऑफ कोर्स लाइक फर्स्ट लव का तो सवाल ही नहीं उठता. फर्स्ट लव तो हमेशा एक्टिंग ही रहा. लेकिन एक्टिंग को सपोर्ट करने के लिए जो है, जिसे कहते हैं कि आपको पैसे चाहिए बॉम्बे में, आप यू हैव टू लाइक वर्क योर वे आउट. यू कांट बी लाइक अ ड्रीमर ओनली. जैसे मैं बोलता हूँ कि सिर्फ ड्रीमर बनने से आपको काम नहीं मिलेगा, आपको हार्ड वर्किंग ड्रीमर बनना पड़ेगा. यू हैव टू लाइक वर्क टुवर्ड्स इट. एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू डू सम काइंड ऑफ जॉब. अब मैं इंडिया आई थिंक कल्चरली इतना इन्वॉल्व नहीं है कि आप जाके रेस्टोरेंट्स में वेटर बन जाओ या पेट्रोल पंप में जाके पेट्रोल भराओ, क्योंकि वो सब करने से आप अपने माँ बाप की नाक कटवा रहे हो. पता नहीं कैसे कटती है, लेकिन कटती है. अब नाक कटाने के चक्कर में जो है आप कोई काम ढूंढते हो, और वो इज्जत वाला काम ढूंढना बहुत जरूरी था. और ऐसा काम ढूंढना जरूरी था जो कि शायद एक्टिंग से रिलेटेड हो और एक्टर्स के आसपास रहूं या उनके बारे में कुछ सीख पाऊं या डायरेक्टर्स के आसपास रहूं. बहुत लोगों ने असिस्टेंट डायरेक्शन का बोला, लेकिन मैं उनको एक बार सेट पे जाके मैं देख चुका था कि बहुत भागादौड़ी होती है. और उनको बेसिकली जिसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि कई बार असिस्टेंट डायरेक्टर्स का जो काम होता है वो एक्चुअली डायरेक्शन डिपार्टमेंट से कोई लेना देना होता ही नहीं उस चीज का. वो बहुत ही कभी कभार ऐसी से काम करने लगते हैं जिसका एक्चुअली डायरेक्शन. sometimes I've seen ADs blocking traffic on road. I'm not saying that they should not be doing that. But I don't know how that is, related to direction or, related to actually, so that's almost like a set management job. Right. But so I wanted to learn. I wanted to evolve. I have, of course, done plays and I've read so much, and I was working with so many, good actors back in Delhi, like Ashish himself. So obviously, I wanted to be there. I wanted to be there in the current scenario. इसलिए मैंने कास्टिंग का काम चुना. और बहुत सालों तक जो है मैं ये भी सोचता रहा कि शायद कास्टिंग करते करते पीछे मैं क्यूज दूंगा तो मेरे डायलॉग्स को सुनकर जो है डायरेक्टर्स इंप्रेस हो जाएंगे और मुझे काम देंगे. लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं. बहुत बार कभी कभार कुछ रोल्स ऑफर हुए, लेकिन वो रोल्स मुझे पसंद नहीं आते थे. मतलब मुझे लगता था कि क्योंकि हिंदी फिल्मों में हीरो के अलावा जो है बाकी सारे रोल्स जो उसका कोई मायने मतलब कोई एक्चुअली कोई मीनिंग होता नहीं था. when I came here 10-12 years back. Right. धीरे करते काम करते I started learning on the job, and then finally I got my first breaks and everything. So what's very important, what I have learned is that of course I lost hope. I was rejected, and I also contemplated completely leaving acting and getting into probably something else like writing or direction or production, because I thought that probably I don't have the talent because of the city rejecting me so many times. But just because I was at it, just because मैं काम करता रहा, शायद इसलिए मुझे उस कर्म का थोड़ा सा एक फल मिला जहाँ पे मुझे opportunities मिलने लगी. So that is what I want to tell all the young actors, in the country, and whoever wants to make a mark, that don't just come to dream. अब उस ड्रीम को सपोर्ट करने के लिए हार्ड वर्किंग बनना बहुत जरूरी है. तो कोई ना कोई काम ढूंढो जिससे कि आप सपोर्ट कर पाओ अपने आप को. यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ आल्सो. व्हेन यू आर नॉट टेकिंग मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स, व्हेन यू आर सपोर्टिंग योरसेल्फ ऑन योर ओन इन एन एक्सपेंसिव सिटी लाइक बॉम्बे, यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ. योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बी हायर. यू विल नो हाउ टू टॉक टू अदर्स, एंड आल्सो यू विल आल्सो अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्री काम कैसे करती है. वो बहुत जरूरी है. इतनी कमाल की जर्नी में बहुत ही कम लोगों की देखी है. आई थिंक इट्स सच अ स्पेशल जर्नी, एंड और हमारे देश में आधे लोग क्या सारे लोग बॉम्बे एक्टर बनने ही आते हैं. कोई भी राइटर या डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर बनने आता बहुत कम लोग हैं. मतलब 95% of the people come to Mumbai to become an actor, to say no to that dream and start something else and do something else, even if it's connected to acting. I think you need a lot of guts and a lot of heartbreak होता है यार, heartbreak होता है. Because जब मैं एक्टिंग नहीं कर पा रहा था तो रेडियो मुझे करना पड़ा, तो मुझे लगा कि यार तो heartbreak होता है. बट उससे बाहर निकल के आई थिंक जो अभिषेक ने किया, it's really commendable. Adding on to what Abhishek and Apar are saying, like even I've been knowing Abhishek since college, and I've been knowing Apar for a very long time. Even Pranutan, like one thing is very common across all, like for actors it's very important for the intention to be correct. What are you here for? Like everyone is here for the love of the craft called acting. Yeah. You become a star, you become a hero, you become a heroine, all these are byproducts. You play a protagonist in the film. And acting is an art form.
So everyone sitting in this, whatever we call it, this console or this virtual meeting right now here as actors, they take their craft very seriously. So it's very important for you to be very sincere towards your craft. The moment you get enamored by the glamour of it, if at all, if there's any, then that's when the spiraling down happens, you know. Ashish, how much do you think the Indian audience has evolved in terms of watching movies that are made on the so-called taboo topics, and what is your hope and actually all of your hopes from Helmet? I'll tell you what has happened slowly is with the coming of OTTs, suddenly we have gotten access to global content. Whatever that's happening outside is actually a finger touch away. You can see how the world is making cinema, how different kind of content is made everywhere around the world. So the moment you have something to compare with now, you as an audience also, the way you perceive things, the way you receive things also changes. Now they're far more open to experiment with the kind of content they want to see. And suddenly a film like Helmet coming, which is about probably the biggest taboo that we have, sex. Yeah. Sex के बारे में बात किसी को नहीं करनी, लेकिन करना सबको है. अगर हम सेक्स नहीं करेंगे तो हमारी स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर सकती ना. ये एक सर्वाइवल एक्ट है, ये एक प्लेजरेबल एक्ट है, जरूर है, रिक्रिएशनल एक्ट है, बिल्कुल है, बट ये प्रोक्रिएशन का भी एक्ट है. हम 200 करोड़ छूने वाले हैं. जो एक बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी है, बेसिक ह्यूमन नीड है, अगर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अगर हम उसके बारे में फिल्म बनाने से घबराएंगे, मुझे नहीं पता कितनी फिल्में बनी है इसके ऊपर, नहीं बनी. You can count them on your fingers. अगर आप एक बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी, बेसिक ह्यूमन नीड, बेसिक ह्यूमन सर्वाइवल मैकेनिज्म के ऊपर खुल के बात नहीं कर सकते ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में. और ये खाली हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल लेवल पे भी प्रॉब्लम है. हमारा थोड़ा पीछा रह गया है, ये हर देश की प्रॉब्लम. एंड पारुल, एज यू सेड कि हम कितना इवॉल्व हो चुके हैं एज एन ऑडियंस, यू नो, मुझे नहीं लगता है ज्यादा हुए हैं डेफिनेटली. एज आशीष सेड, यू नो, अब हमारे पास एक ग्लोबल कंटेंट आ गया है, वी कैन, यू नो, रियली वॉच इट एंड ऑल दैट जैज. बट फिर जैसे, यू नो, काफी बार लोगों ने कहा कि यार आपकी यूनिवर्सल सर्टिफिकेट मिला कि एडल्ट सर्टिफिकेट मिला. उनका सवाल मतलब एक कहीं ना कहीं उनके दिमाग में डाउट रहा. थैंकफुली वी हैव अ यूएस सर्टिफिकेट. जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म देखी, एक भी कट, इमेजिन अ फिल्म ऑन कॉन्डम्स, एक भी कट नहीं है उसमें. जिस तरह उनको स्टैंडिंग ओवेशन तरीके से उनको दिखा रहे हैं, जो हम दुनिया को दिखा रहे हैं. ऑल्सो दे वर ऑफ द ओपिनियन कि यार हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, यू नो, हेल्थ डिपार्टमेंट हैं और अदरवाइज, यू नो, व्हाई कैन आई कनेक्ट यू टू देम, बिकॉज हम कब से, यू नो, कॉन्डम्स को लेकर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट. And I think this film, you know, does that in a very smooth way. Should we connect you guys to those, you know, authorities to know that, understand it, and you know, understand that it's just so overwhelming, you know, for us to be presenting a film. And that's what we hope that people, you know, do connect, and we in a way help Indian audiences to evolve in terms of, you know, कि हमें sex education बचपन से ही देनी है. I think this is one of the most meaningful, you know, conversation we've had. So this got really, really serious in the right way. And also before starting, you know, the interview, मैंने आपसे पूछा था कि आप दिल्ली से हो क्या? आप दिल्ली में हो क्या? And you said नहीं, मुंबई में ही हूँ. You had that vibe थी कि she knows this world, she knows us. एक कुछ था, something about you. Also the name, by the way, my name was earlier Aparshakti से पारुल था. Yeah, that's all. Oh, that's so cool. पाजी, आप पारुल थे? पारुल था पाजी में. Imagine मेरी hello namesake. So yeah. ओ यार, मेरा नाम पारुल होता तो कैसा होता है? बड़ा हो. Unfortunately, we are out of time. Wish this could have gone on longer, but thank you so much. It was an absolute pleasure chatting with all of you, and the very best of luck to all of you. Can't wait to watch Helmet. Thank you, Parul. I love it. Thank you so much, guys. Thank you.